Hi everyone, in this video we will calculate the Laplace transform of the function ft is equal to sine at. Right? We'll see what is its Laplace transform and what is the method to calculate the Laplace transform. So I hope you remember the formula that Laplace transform of ft is equal to 0 to infinity e raised to power minus st ft. So अगर आप इन जनरल इसको डायरेक्टली यहाँ पे sin 80 को पुट करोगे, जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं ना, e रेस्ट पावर माइनस एस टी साइन 80 dt। अब देखिए जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के बहुत लंबा चला जाएगा ये सम, ये क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा इसको ट्रिक से करते हैं। लेट अस यूज सम ब्रेन दैट वी आर गिफ्टेड विद। So we know that e raised to power iota at, we know that this thing we know that e raised to power iota at is equal to cos at plus iota sin at. This thing we know, right? This is the formula that you should know. If you don't know, right? We have to use. We will use this thing. So e raised to power iota at can be written as cos at plus iota sin at. So we will calculate the Laplace transform of e raised to power iota at. लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा एटी का निकालेंगे। सो हमारे पास इसका निकल जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एटी प्लस आयोटा साइन एटी। अब हमें पता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म तो लीनियर होता है, सो दिस विल बी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एटी प्लस आयोटा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी। मतलब जो भी हमारे पास इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आएगा उसका रियल पार्ट जो होगा दैट विल बी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एटी and complex part will be Laplace transform of sin 80. So compare करके हम आंसर दे देंगे and this will be easy to solve. Let me show you how. So let us proceed. We have to calculate Laplace transform of sin 80, but I will calculate Laplace transform of e raised to power iota 80. Going in this way, e raised to power minus st, e raised to power iota 80 dt. So this Laplace we know limit k approaches infinity 0 to k e raised to power minus s minus iota a t dt. Right? This is this thing. Now solving this, it gives us limit k approaches infinity e raised to power minus s minus iota a t by minus s minus iota a from 0 to k. और अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। This is limit k approaches infinity e raised to power minus s minus iota a k by minus of s minus iota a plus limit k approaches infinity e raised to power 0 and e raised to power 0 is 1 by s minus iota a. So this limit sorry this limit now, अब इसके आगे दो केसेस बन जाएंगे। Case 1, case 1 if s minus iota a is greater than 0, then limit k approaches infinity e raised to power minus s minus iota a k goes to 0, right? क्योंकि s minus iota a पॉजिटिव होगा तो this whole terms goes to minus infinity and e raised to power minus infinity is 0. And if s minus iota is negative, then this limit will tend to infinity and hence does not exist. So this case 1 will consider s minus iota is greater than 0. And this will give us the value 1 by s minus iota a. Right? So concluding, we have got Laplace transform of e raised to power iota at is equal to 1 upon s minus iota a. अब इसका हमने रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग करना है, सो इसको हम कर देंगे rationalize. We will get it equal to s plus iota a by s square plus a square. Now Laplace transform of e raised to power iota at क्या था? Laplace transform of cos at plus iota Laplace transform iota into Laplace transform of sin at.
and it becomes s upon s square plus a square, and it becomes iota into a y s square plus a square. So comparing हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंपेयर करके हमारे पास आ जाएगा लैप्लेस ऑफ cos at is this thing s upon s square plus a square, and Laplace transform of sin at is equal to a upon s square plus a square. So देखिए हमने sin 80 का निकाला था, cos 80 का अपने आप आ गया, जादू. So this was all about this video. Thank you very much.